Now, question number 2. First of all, read this question. The following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different section of Indian society is given below. Okay, so here we have the section and number of girls per 1000 boys. That is, this data is given to us. Scheduled caste SC 940, scheduled tribe ST 970, non-SC ST 920, backward districts 950, non-backward districts 920, rural area 930, urban area 910. Represent the information above by a bar graph. Second question, in the classroom, discuss what conclusions can be arrived at from the graph. Okay, in the classroom, discuss what conclusion can be arrived at from the graph. So first of all, we need to represent this information above by a bar graph. So here we have different type of sections. Okay, here we do not have numerical value. Here we have different type of sections. So this data we need to represent on the x-axis, and these numbers we need to represent on the y-axis. And this graph we can also draw by using the bar graph. Okay, for each type of section, each bar here we try to draw here. So first of all, students, again we need to draw our two axes, x and y. Okay, so first of all, draw the two axes. So here y-axis and x-axis. Okay, now on the x-axis we need to take this sections. Okay, so here देखो यहाँ पे क्या करना है कि एक बॉक्स ब्लैंक छोड़ना है, एक में लिखना है, एक बॉक्स ब्लैंक छोड़ना है, एक में लिखना है. So first of all SC, then एक ब्लैंक छोड़ेंगे ST, उसके बाद है नॉन SC ST, so नॉन SC ST. ओके, आफ्टर इट अगेन एक ब्लैंक छोड़ेंगे और है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स. सो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, उसके बाद है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, देन रूरल एंड अर्बन. Okay, so here our origin, here different type of section, whatever information we need to we represent here, that we need to write here by showing this arrow. Okay, section. Now on y-axis we need to take this numerical value. Now we need to take the numbers, okay, such that we can cover the minimum value and maximum value too. मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू कवर हो जाए, उस हिसाब से हमें यहाँ पे जो ये जो वैल्यूज है वो यहाँ पे लेनी है. सो मिनिमम वैल्यू आप देखो तो है 910 और मैक्सिमम वैल्यू देखे तो 970. सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज लेंगे. ओके, सो हियर 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990 and 1000. Okay, and this data it is number of girls per 1000 boys. ओके, एंड सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो गैप लिया है वाई एक्सिस पे वो 10-10 का लिया है, 910, 920, 930, 940. तो आप ये सोचो कि 910 के आगे क्या होना चाहिए था. 10-10 का गैप लिया है तो 910 के आगे 900 होना चाहिए था, बट हमने क्या लिखा है
0, तो वहां तक का ग्राफ हमने स्किप किया है, तो इसको हम ऐसे एरो से शो करेंगे। ओके, ऐसे जिगजैग लाइन से शो करेंगे, ऐसे जिगजैग ड्रॉ कर दो। ये क्या शो कर रहा है कि यहां तक का ग्राफ हमने स्किप किया हुआ, मतलब कि हुआ क्या है कि इनके नीचे भी नंबर्स है 900, देन 890, 880, बट जैसे हमको थ्रेड होता है, राइट, थ्रेड होता है, उनको हम ऐसे पास में ला दे तो वो कैसे जिगजैग जैसा हो जाता है, मतलब कि हमने वो जूम आउट किया, उस हिसाब से हमने यहाँ पे किया है कि वहां तक का ग्राफ जो है वो हमने साथ में इकट्ठा कर दिया, मतलब वहां तक का ग्राफ जो है वो हम जिगजैग से शो करते हैं, वहां तक का मतलब स्किप हुआ है। ओके, नाउ वी नीड टू स्टार्ट अवर बार ग्राफ। So first value is 940. Okay, so first bar, that is for the 940 up to so here write down 940, then up to 970. Second value is 970, that is given in the equation. So up to 970, then 920, then third 950, then 920, then 930, then 910. Okay, and we need to write the scale measurement here. So here on x-axis we do not have numerical value, so that we do not need to write in scale measurement. We need to write this scale axis, scale measurement for the y-axis. Okay, so for y-axis now 1 centimeter, that means 1 box, तो 1 box पे हमारा गैप है 10-10 का, राइट, 10-10 का गैप लिया है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, बट ये है क्या, गर्ल्स, so 10 girls. So here our graphical representation is over. Okay, in this way we can draw the bar graph. Now here we have the second question, that is, in the classroom discuss what conclusions can be arrived at from the graph. So from the graph what conclusion we can write. So here we have lots of things that we can observe from the graph. Okay, आप इन सब के आंसर्स देखो, सो नियर अबाउट 1000 ही है। ओके, सभी की जो रेंज है वो 910 से लेकर 970, मतलब ये बहुत ही कम रेंज है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो इन सब के आंसर्स ऑलमोस्ट सेम है। ओके, ऑलमोस्ट इन सब के आंसर क्या है, सेम, तो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम द ग्राफ we can observe that in each section number of girls are nearly same. Okay, this is first conclusion. Now second thing that we can observe from the graph, that is, in each section number of girls are less than number of boys. ओके, ये जो वैल्यूज है वो पर 1000 बॉयज है, तो इन सब में आप देखो ये वैल्यू 1000 से कम है, तो वो भी एक हम लिख सकते हैं कि सब में गर्ल्स की जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो लेस देन नंबर ऑफ बॉयज है। ओके, so just write down here
we can also observe that the number of girls in each section are less than the boys. Okay, now we can also observe that maximum value it is in ST scheduled tribe and minimum value that is for the urban area, right? So that observation we can also write here. So here also it is observed that the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys are maximum. So maximum value कहाँ पे है? ST. Okay, maximum in ST, that means scheduled tribe. Whereas they are minimum value कहाँ पे है? Urban areas में, right? In urban areas. Okay, so this many observation we can track from the graph. Okay, from the graph we can observe that in each section number of girls are nearly same. Then we can also observe that the number of girls in each section are less than the boys, and also it is observed that the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys are maximum in scheduled tribe, whereas they are minimum in urban areas. Okay,